But I think the black one was really nice. These I don't really think कि ये बहुत कोई interesting effect आ रहा है अभी. Let's convert it to color again, or just create a darkish environment. Yes, this looks fine. Yeah, this looks fine. Okay, so we need to create some text effects as well. But however, let's go back to the pure reference and see what we can do to enhance it more. Okay, so we have created a bit of an effect like this. However, the background is a bit grayish. Okay, so maybe we can just make it a bit more darker, just a bit more, not too much. Okay, so I think this looks fine. Now let's get back to it again, and see what we can do. Let's see. Yeah, we can create an effect in which background में थोड़ा सा ये color वगैरह आ जाए और फिर ये देखें यहाँ से blue light है और light भी हम change कर सकते हैं. I'm not really sure we should do that, but okay, yes, Oppo X5 future, we can do this in post. We can do this. This effect, I really like this gradient. This gray is really nice. So let's try that out. Let's try that out and see if we can pick it from here. अब क्योंकि मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाह रहा तो आई विल जस्ट रिमेंबर दिस कि इसमें जो वैल्यू है वो 4 है. So if I just mess it up, I will just bring it back. So I'm just going to go to just move it to another monitor and pick this color from there. Okay, so I think वो पहले वाला ही हमने दोबारा पिक कर लिया, which is not bad, which is not bad. And I think if we make it in gold, let's try that. अगर वो गोल्ड अच्छा लगता है तो स्क्रीन फ्रंट लेंस बेस मटेरियल था वो. एंड लेट्स ट्राई specular, maybe try specular in some orangish yellowish sort of. अरे हिल गई और वो हो तो रहा है. Yeah, it does have a good effect to it, and I think it's not bad though. It is not bad, but I'm not really sure about it. You know what? Let's compare it. Let's compare it. For example, हमारे पास अभी ये है, तो compare में आता हूँ मैं, स्टोर रेंडर बफर करता हूँ, ठीक है. एंड ये आपको ये एक बार दे देगा जिसको आप मूव कर सकते हैं, और फिर आप क्या करें, इसको वापस 0 0 वैल्यू मिलने हैं, ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट वेट जब तक ये हो जाता है पूरा, एंड देन वी कैन सी एंड देन वी कैन कंपेयर कि क्या हो सकता है. So this does have some premium feel to it, by the way. बट ये नीचे आते आते ना बहुत डार्किश हो जाता है. सो मे बी इफ वी सो मे बी इफ वी गो बैक, ठीक है, इफ वी गो बैक एंड सी कि भाई हमारे पास जो लाइट्स आ गई. लाइट्स इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने यहाँ से बंद की हुई है. मैश बंद कर देता हूँ फिलहाल में, और ये कैमरा भी बंद कर देता हूँ ताकि मैं लाइट्स पे फोकस कर सकूँ. सो मुझे लगता है लाइट्स भी जो हमने लगाई है ना, वी कैन जस्ट मेक देम अ बिट मोर. टेम्परेचर जो इनका है, इनको थोड़ा बढ़ाएंगे तो वो खुद ही होता चला जाएगा. क्या कहते हैं, वार्म. बट ये कि मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ. तो इसी के मैं जैसे ही लाइट को थोड़ा सा वार्म करूँगा तो यू विल स्टार्ट टू सी. अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया. मैं इसके बफर ऑफ करता हूँ, मैंने पुराने वाले पे लगा दिया. एंड लेट मी जस्ट गो बैक हेयर. कहाँ गया बैकग्राउंड, और नहीं, मुझे इसमें जाना था, और यहाँ पर मैं इसको जो स्पेक्युलर है वो मुझे सेट करना था वापस.
Okay, so that's how it was. और की लाइट इसकी कर देते हैं हम, थोड़ी सी सटल, बहुत ज़्यादा हो गई. So you can see that lights and these kind of effects are really nice. But you know what? I am not really a big fan of colors. So I'm not really going to use this. Maybe you guys would like this one better, but I will just go with the white one. Okay, I like this one. This feels more cool and it has have a good vibe to it. Yes, but you can play with colors of light. It it's not like you cannot just play with anything. If it's this looks interesting, nice. So you can play around with colors. Maybe if you can just change this one और इसका भी आप कलर थोड़ा सा पिंकिश वगैरह कर दें, तो you will see कि आपके जो डिफ्यूज है और ये सारी चीज़ें अभी इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि डिफ्यूज में चेंज करें, एमिशन में जाकर इफ़ यू चेंज द कलर ऑफ इट you will see some differences. So you can see that this looks a bit more, cyberpunk sort of slightly vibe to it. It has a vibe of punk. Okay, but again, I'm not really sure of this part. ये part थोड़ा सा मुझे ऑफ इसलिए लगता है कि मैं चाहता हूँ यहाँ से नीचे आते आते ये सब कुछ फेड हो जाए, और maybe not. So let's just remove the emission, change the color. So, it is all up to your taste because now you know how to do these things, and we are not doing anything so much complicated. It is really simple once you get the hang of it. So, I think, let's just try one more thing. In the camera, where is the camera? So, मैं अब सब ऑफ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैमरा ऑन कर रहा हूँ so that I can focus on it. बैकग्राउंड को मैं इस लेयर में डाल देता हूँ LD की, और मैं इसको एक इंक्रीमेंट सेव कर देता हूँ. Okay, so once I save it, यहाँ पर camera tag, Octane camera tag में जैसे ही लगाऊंगा, you will see a lot of options popped up here. ठीक है, which is really nice to have. मैं इसको भी इसके अंदर रख देता हूँ ताकि मैं ज़रा back and forth सही से कर सकूँ. Okay, so enable camera images. जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, re-render होना शुरू होगा ये. Okay, so now I need to play with some darkness and brightness values. Okay, because in this thing we have some huge contrast going on. इधर भी, इधर भी, इधर भी. So let's start to do that. कहाँ गया, इस पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे. गैमा को देखते हैं, गैमा जैसे ही बढ़ाऊंगा यू विल सी द डिफरेंस. सो डोंट वरी अबाउट playing with these things. So as you can see, मैंने जैसे इसको थोड़ा सा drop किया, it looks really nice. At least I like it because at the end of the day, it is all about your personal taste. So if it is better, then the output will be better as well. And the personal taste depends on your mood board. Okay. Yeah, I really like this darkness, और उसने बहुत अच्छा गैमा को कम करती, मुझे बहुत अच्छा एक वो मिल गया darkness और एक वैल्यू उसकी. ठीक है, और I really like this sleekness, और ये मुझे अच्छा है कि यहाँ पे ना कम थिन हो रहा है, फिर थिक हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाती है, तो ये फ्लैट नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि नेचुरल है थोड़ा. ठीक है, एंड ऑब्वियसली इट विल बी रोटेटिंग कि जब ये एनिमेट हो रहा होगा. वी आर स्टिल जस्ट टॉकिंग अबाउट वन फ्रेम. अब इमेजिन इफ वन फ्रेम इज लुकिंग रियली नाइस, then the overall animation would be wonderful, right? Okay, so hmm, yes, so we were just setting up gamma. Let's try to use custom LUT. Arabic को pick करते हैं. अब ये change होते रहेंगे time to time, so you can press up and down arrow to switch them. ओके, आई थिंक अभी एक चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रही है, वो है इन दो बटन्स. ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गए हैं, राइट? सो लेट्स जस्ट वर्क ऑन हिम.
I really like dark stuff, so maybe I will just pick something क्योंकि कुछ जिसमें कुछ नज़र ही नहीं आया, so I will stop the recording and get back to it ताकि at least it is visible. Um, okay, I think one thing is bugging me, which is the dropping of this line क्योंकि ये कम हो रही है फिर ज़्यादा हो रही है. Let's just do one thing कि इसको मैं थोड़ा सा ये तो करीब ले आऊँ. नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया. इसको थोड़ा सा आगे ले आऊँ. Let's see. थोड़ा सा और करीब और करीब. Oh, come on, man. Yeah, it is starting to look better. See, so I just want these lines to look more clear क्योंकि वो जैसे ही मैं change कर रहा हूँ लट्स वो ख़त्म ही हो जाती हैं. ठीक है, so you need to play around with these things. Maybe ठीक है, तो there's no क्या कहते हैं restrictions कि आप इनको मोड़ नहीं सकते, rotate नहीं कर सकते. Do whatever you want, scale them, rotate them, whatever you want, because at the end of the day ये output सही होना चाहिए. Maybe just slightly, बहुत slightly, if we just increase the emission of it. See, it has started to make some noise to it. Okay, so I think this is nice. This is nice, and let's just get back to it and see some of the stuff. अच्छा, ये हमने बनाया है और let's change करते हैं. This looks nice. This has some party sort of vibe to it. ये भी अच्छा है. But I want कि details सारी merge नहीं हो जाए, ख़त्म नहीं हो जाए कहीं. I really like this one, but इसमें देखना details सारी ख़त्म हो जाती हैं. So maybe हम इसकी strength कम कर दें. Just till when we get some details back. Maybe इसको 0 करते हैं. ये हमारा है. And yes, I think this is fine. Okay, so one thing which we can also do is to mess around with the diffuse of the screen and see how it works. You see, it is starting to look really nice now. You see, it looks like a screen. And maybe let's just do one more thing. Let's just try one more dramatic thing. Let's just add a good gradient background. Okay, let's just try that. Cool सा, खूबसूरत सा, हसीन सा. Maybe this. Maybe this one. We can also create our own one, but right now let's just see कि किस तरह का view आ रहा है, कैसा लग रहा है देखने में. Let's try this one. So again, I have told you guys how to do that, so let me just open this up. In the diffuse tab, just go into the texture, into the C4D Octane. यहाँ पर आपको मिल जाएगा image texture में अंदर जाएं, यहाँ पर छोटे से folder पे click करें, into the texture folder, click on this, press enter, and you have your background. Now, I don't really think it is a good option, but let's see if we go into the emission in the texture, and texture में भी मैं यही put कर दूँ. कहाँ गया? कहाँ गया? image texture, or in the image texture, click on this छोटा सा box, open it up. Let's see. In the emission, go into the emission. इसको मैं 1 करूँ. Let's see. So yeah, it doesn't look really
bad, but maybe yes, maybe not. And the specular, let's increase the opacity of it. Hmm. अच्छा, तो अच्छा मैं कह रहा था बटन्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं जब यहाँ तक आ गए तो बटन्स स्पेक्युलर मैंने क्या किया था बटन्स के लिए, कुछ किया था मैंने बटन्स को। बटन्स बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। व्हेन डिड दैट हैपन? इतने बड़े बटन्स हैं इसके। लेट मी चेक, लेट मी जस्ट क्विकली हैव अ लुक। इतने बड़े बटन्स थे इसके? आई डोंट रियली नो। यहाँ एक लॉक का था। ओह, दिस इज नॉट अ बटन, दिस इज नॉट अ बटन, दिस इज जस्ट अ surface of it. I will get back to this later. So let's just, for now, let's just remove it. This is not a button. Animated mesh on किया, यहाँ पर आए और right buttons, right, इसमें extruded, इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। Okay, so ठीक है, अब जब कर ही रहे हैं तो इसको भी फिक्स कर देते हैं यार। कहाँ गया राइट बटन्स? ठीक है, एक्सट्रूडेड, इसको ऊपर रखा और इसको बंद किया, इसको खोला। ठीक है, नाउ वी हैव दिस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नाउ वी हैव दिस। सो इट्स बेसिकली अ सरफेस। ये बहुत एक इट इज़ जस्ट अ सरफेस। ठीक है, और इसके ऊपर बस एक सटल सा एक एम्बोज हुआ हुआ है, दैट इज इट। और ये ऐसा होगा भी नहीं। लेट मी जस्ट गिव यू, ये समझे एक सरफेस के ऊपर एक स्क्रैच सॉर्ट ऑफ, स्टिकर सॉर्ट ऑफ एक बस प्लेस हुआ है जो कि कोई इम्पोज नहीं हुआ हुआ और इसका कोई पर्पस एज सच है नहीं। ये आई थिंक 5G कनेक्शन वगैरह के लिए है। मैंने सर्च फॉर इट, उस वक्त मुझे पता चला था। ठीक है, सो अच्छा ये हो गया। एंड नाउ जस्ट लेट मी पुट सम हियर। ठीक है, अब इसमें बस मुझे ये करना है कि ये कहाँ गया, ये बेस मटेरियल का ही मैं एक डुप्लीकेट लूँगा। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा 5G पोर्ट भी नहीं है ये, 5G एरिया कह देता हूँ मैं, ये सर्विस कह देता हूँ। ठीक है, फॉर नाउ। एंड लेट्स जस्ट मेक इट हियर, और इसको मैं स्लाइटली सा, बहुत स्लाइटली सा रेफरेंस बढ़ा देता हूँ। सो लेट्स सी क्या वेरिएशंस आती हैं। और स्पेक्युलर maybe I just want to see a change in this surface. That is all. That's what I want. Okay, बहुत subtle सा। I don't want anything to be embossed, fully embossed, or anything like that. Okay, so बेहतर तो लग रहा है, बट ये कि यहाँ पे देखना, ये ग्लास वाला जो एरिया वो थोड़ा सा ऑफ हो गया। सो लेट जस्ट क्विकली फिक्स इट। अच्छा, मैं ये कर रहा था कि इसको सटल सा चेंज ला रहा था। ये आ तो गया है, बट मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है ये एरिया। इसको थोड़ा सा और अंदर करना पड़ेगी। यू सी दिस क्रीज शुडंट बी दिस मच popped up. Let's just zoom it way more. इतना, यस, बहुत स्लाइटली से इसको निकाल देते हैं, बहुत स्लाइटली से। ठीक है, ना होने के बराबर। Okay, so ये हो गया। And there's one more thing to it. I don't know why it's not here at the moment. But anyway, let's just create one. यहाँ पर एक सर्कल भी होता है, पता नहीं ऊपर होता है नीचे होता है, I don't know, but for now let's just create one. In the vector settings, इसको मैं बंद कर देता हूँ, बहुत हैवी हो जाएगा वरना। ठीक है, इसको यहाँ पर आए, वेक्टर सेलेक्ट किया, पॉइंट सेलेक्ट किए और सिलेक्शन बना देते हैं। ठीक है, और इसको मैं ऊपर ले आता हूँ जब तक ये सर्कल बना दे। ठीक है, इसने सर्कल बना दिया। नाउ वी जस्ट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट। और इसको मैं कहाँ गया, मैश आई थिंक एग्जीक्यूट सेंटर करना है मुझे। Access center or execute. Let's see. Yes, it worked finally. And we just need to put it a bit more inside of this. Okay, or obviously we will need a separate surface for it. So let's just create one.
So ये surface 5G surface 2, let's just call it 2, और इसके ऊपर ये रखते हैं, ये थोड़ा सा bright होगा, so let's just make it a bit more bright, और मैंने इसको बंद किया हुआ तो इस वजह से वो preview नहीं आ रहा है, so you can see it is starting to look, it started to change a bit, मुझे लगता है नीचे था वो, हाँ नीचे था. अच्छा, one more thing I think कि ये बटन सेंटर में नहीं है, पता नहीं, मुझे लग रहा है ये है ऐसा, लग तो रहा है यहाँ से डिस्टेंस कम है, यहाँ से ज़्यादा है, सो लेट्स जस्ट डू दिस कि हम इसको भी थोड़ा सा इधर ले आए. यू सी यहाँ पर वो लगता है कि बहुत ज़्यादा, so we can cheat these things as well. Yeah, it's all about creating the right frame. So you can see that how much effort you can put in just creating one shot, and we are far more away to creating the to create some the other shots, and we will be doing the same thing. Maybe I will just stop the recordings and move further in the next shots, but I will show you guys how it is done in a faster way. But let's just say कि एक इस पर थोड़ी और बहस कर लेते हैं, and then we will just do quick things in the moving on shots, and the shots moving on. Okay, फिर ये part रहता है, let's just work on that. सेव कर लेते हैं जल्दी से, और ये क्या है, स्क्रीन फ्रंट कैमरा, और ये पार्ट ये है, और इसको मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, and let's get back to it. Now you can see it. Okay, screen. So I will just select these 3, ये 3, और मैं सबको ही एक साथ आगे ले आता हूँ. So let's see what happens. ठीक है. अच्छा, मुझे लगता है कि if I just select on this one, and in the transmission section just mess around with a few things. Yup, I get it. It worked. Nice. Finally. ये छोटी छोटी खुशियाँ. diffuse slightly, so इसको बढ़ा देते हैं. Let's see. क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा. बहुत slightly, so let's just zoom in and just increase this like this. Maybe we'll start to see something. Nice, finally. Okay, now we can just play with this thing. Okay, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा डार्क होता है. ठीक है, ये फुल डार्क होता है, फुल एंड फाइनल डार्क. और कहाँ गया, इसको थोड़ा सा ग्रेइश रखना होता है. यस, ठीक है. अब आ जाते हैं ये अंदर की सरफेस पर, ये मेटल है. And let's just zoom out now and see how it is. How does it feel like? Yeah, it feels fine. It looks fine. It feels fine. Okay, so मुझे लगता है थोड़ा सा इसको और स्केल अप कर देते हैं. इस पूरे मॉडल को बहुत छोटा सा चुटकू सा लग रहा है, बट इसको हम चेंज करेंगे तो हमारी एनिमेशन भी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट गो हियर एंड सी दिस, तो क्या किया जाए फिर ये किया जा सकता है कि कैमरे में देखते हैं हमने की कहाँ कहाँ लगाई हुई है. कोऑर्डिनेट्स कैमरे में कहीं की नहीं, कैमरे में कोई की राइट नहीं की. अच्छा, हमने फ़ोन को एनिमेट किया वैसा ही, तो दैट मेक्स एवरीथिंग ईजियर. सो लेट मी जस्ट, इसको मैं जब तक हटाऊंगा नहीं इस पर से मूवमेंट पता नहीं चलेगी. तो इसको मैं बैकअप कैमरा कह देता हूँ भाई, इसको कुछ पता नहीं होता वक्त और हालात का. कैमरा बैकअप, ठीक है. अब इसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं चेंजेस कर रहा हूँ. So let's just okay, so let's just a bit more. Okay, we are good. And let's see कि ये composition में किस तरह से लग रहा है. Geometry only को कटा देता हूँ मैं, और इसको slightly सा नीचे ले आता हूँ. Okay, let's see what we have created so far.
सेव करते हैं और चेक आउट। Yep, this looks better. This looks okay. यहाँ पे देख रहे हैं रिफ्लेक्शन सब खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ फिर आ रहा है। अच्छा यहाँ भी आ रहा है। We haven't तबाह anything. Okay, so everything looks a bit dark right now. Let's just go to this section and see what we could. In the post, let's just enable this. In the bloom, let's just create some bloom effect. Okay, this looks sexy. ठीक है, ये कटर है, इसको ऑफ थोड़ा सा। एक्चुअली ब्लूम क्या करता है, ब्लूम आपके जो वाइट एरियाज हैं उनको ब्लूम करता है, ठीक है, वहाँ से ग्लो निकालता है अगर बहुत आसान अल्फाज में बात की जाए। और कट ऑफ क्या करता है, कट ऑफ जो ब्लूम इफेक्ट है उसको कोशिश करता है कम से कम रखे, और जितना कट ऑफ बढ़ाएंगे उतना ब्लूम इफेक्ट कम होगा, ठीक है। सो दिस इज नाइस। अच्छा यहाँ पर देखें, मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम ये नज़र आ रहा है, वो ये कि बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये पीछे की जो लाइन है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो दिस लुक्स सैड, ठीक है, पीछे से कुछ भी डार्कनेस नहीं है, सो इट लुक्स रियली सैड। लेट मी जस्ट डुप्लीकेट इट एंड पुट इट राइट हियर एंड सी व्हाट वी कैन हैव। Nice, this looks fine. Okay, so we are getting some good interesting results now. So I know you guys must be bored. It's been almost 2 hours. If anyone was watching this, what to do right now? Let's see. इसको slightly सा पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है नीचे का एरिया बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, इसको भी एक डुप्लीकेट लेके मैं यहाँ पर एक लाइट लगा देता हूँ, बहुत सटल, नॉट टू मच। आई डोंट वांट एनीथिंग टू बी ऑब्वियस। ठीक है, इसको मैं ऊपर भी ले आता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो वी हैव क्रिएटेड समथिंग ब्यूटीफुल परहैप्स। ठीक है, स्केल करने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। स्केल मतलब कैमरा थोड़ा जूम इन करने से। Okay, I think we can do something about the background. Maybe in the next part of creating this one style frame, I will cover that. Okay, let's do that. Let's just pause this and save it. Okay, so there are a few references here जो कि help कर सकती हैं इस part में. Maybe if you go here, कहाँ आना चाहिए, एक रेफरेंस देखी थी मैंने, ये रही। इसी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हम लेकर आ सकते हैं, कुछ चीज़ें हम रख सकते हैं, मे बी स्फीयर्स, मे बी समथिंग लाइक दैट, और मे बी वी कैन जस्ट यूज सम स्फीयर्स, ओके, एंड पुट दिस ऑन द स्फीयर्स एंड सी हाउ दे लुक। लेट्स हिट द रेंडर बटन, और मैं इसको भी कर लेता हूँ थोड़ी सी रेंडर परफेक्ट, और सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और इसको दूर कर देता हूँ, ओके। सो वेयर आर वी, हम यहाँ पर हैं, और इसको so I think this, let's change it to this one, maybe bring the radius to 50, okay. Yeah, we can use this as design element, but I don't think we should right now. One thing we can do is use this as
No, it's not working out. Okay, so let's get back to the background part. Let's mess around with it. Animated mesh, camera. um, इसको भी बंद करते हैं, कैमरा को भी बंद करते हैं। LD में आपके पास एम्बियंट आ रहा है, ठीक है। मैं इनको ज़रा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, स्फीयर्स अलग आ जाए, बैकग्राउंड अलग आ जाए। ओके, इसको बंद करते हैं, वी डोंट नीड इट। एम्बियंट लाइट है, बैकग्राउंड है, ये क्या है? डू वी नीड इट? इज इट समथिंग वी नीड? नो, वी डोंट नीड इट। ओके, attributes, select the background and see how it goes. Yeah, it is starting to feel nice though. Okay, और मुझे लगता है ये थोड़ा सा इस तरफ आएगा। Okay, I think we are good to go, at least in this frame. I will see. I will come back to it if needed. Okay, I will come back to it if needed, and let's just export it and do a quick export of it from here. Okay, I will tell you guys how to render the in a proper way. But for now, let's just create. Let's just come back here. सही है 1920 by 1080. इसका मैं एक अच्छा सा 1004 maybe 2048 पर एक रेंडर निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये जैसी ग्रीन होगा, आई विल जस्ट एक्सपोर्ट इट एज अ PNG. So once it is done, I will export it in the After Effects and mess with it and create some वो क्या कहते हैं, क्या बनाना है? Yes, I will add some text to it. So I think it is done. Let me just save image. For now, let's just use PNG in 16-bit. Save it. और LD short 2 यहीं पर इसका हम आउटपुट रख देते हैं, और we will just call it VO1 because this is VO1 and we will be creating more variations of it. ठीक है, so see you guys. अच्छा, एक काम ये कर लिया, एक काम और ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर नीचे आते हैं और इसका एक अल्फा ले लेते हैं just to create mask out of it. Okay, so let's just save image as PNG, save, और VO1 इसको मैं कह देता हूँ VO1, इसको मैट कह देते हैं, ठीक है। So now we are good to go. See you guys in the next tutorial in which I will discuss how to style frame it and how to see कि किस तरह से इसको और improve करना है in terms of compositing and everything. Thank you. See you.